Hello everyone, once again happy Diwali and wishing you a happy festive season. Hope you guys are doing well and your preparations are going on. I'm here to help you with one of the healthy Diwali sweets that's from my grandma's kitchen. This was my favorite during Diwali. This is Atta Laddu, that's wheat flour laddu and dry fruit. I've added a dry fruit. If you want, you can make it without dry fruits. So I have a big pan, a deep pan heated here, to which I'm going to add 100 grams of desi ghee, that's clarified butter. Overall we are using 200 grams of desi ghee in this, but we will keep on adding the oil in the middle while roasting the flour. So in 100 grams of desi ghee, I'm going to add 200 grams of dry wheat flour. So the quantity of ghee or oil that we use should be half of the wheat flour that we use, and the quantity of sugar and the the quantity of sugar and the desi ghee should be same. So 100 grams of ghee, 100 grams of sugar, and 200 grams of whole wheat flour. So I'm going to add whole wheat flour. My flame is around medium now in the beginning. Later we have to make it low. I'll keep mixing it very quickly. I'll make sure that there are no lumps. We have to keep roasting this wheat flour in the pan till it gets rusty brown, and at the same time we'll keep on adding remaining ghee. This is how it looks after 3 to 4 minutes. You have to keep crushing the flour, wheat flour with the spatula. Make sure your spatula is strong enough. आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के लड्डू देसी घी में. तो आटे का प्रोपोर्शन जितना है उसका आधा घी होगा, और जितना घी है उतना ही शुगर होगा. हम इसमें इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं. पहले मैंने एक पैन ले लिया जिसमें मैंने देसी घी डाला, अराउंड 100 ग्राम्स. मैंने अभी आधा घी डाला है, आधा घी हम बाद में डालेंगे. अब आटे को डालकर हम इसमें भून लेंगे. हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है, इसका हल्का भूरा रंग हो जाए, बहुत डार्क नहीं करना है हमें इसे. और ध्यान रहे कि इसकी सारी गुठलियाँ हमें स्पैचुला की मदद से या चिमटे की मदद से हटा देनी है. इस तरह से क्रश करते करते हम इसे रोस्ट करेंगे. इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है और इसे बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं करना है, वरना वो कच्चा लगेगा. ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं. ठंडी में मेरी दादी हमेशा बनाया करती थी, और ये लड्डू आप अपने बच्चों को आराम से खिला सकते हैं. इस तरह से चलाते रहिए. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अगर आप थक जाएं चलाते चलाते तो इसे फ्लेम से उतार दें और 2 मिनट रेस्ट ले लें. अब फ्लेम को लो कर दें और इसे चलाते रहें, इसे मिक्स करते रहें और इसके लम्प्स को क्लियर करते रहें. कीप मिक्सिंग द फ्लोर till this is the color we get. Make sure there are no lumps. I have added the remaining oil in middle while mixing it. So half of the quantity of the oil of the flour and equal amount of sugar to the ghee we have added. This is ready now. Take it off in the plate or in some other bowl. Don't keep it in the hot pan, otherwise it will burn and change the color. एक बार हमारा इस रंग का डो रेडी हो जाएगा, हम इसे एक प्लेट में या एक बर्तन में या एक थाल में निकाल लेंगे, जिसे हम थोड़ा सा ठंडा करके बाद में इसके लड्डू बनाएंगे. ये इस तरह से ये रंग होना चाहिए, आप ध्यान से देख लें. अगर इससे लाइट होगा तो वो कच्चा लगेगा, और इससे ज़्यादा डार्क हुआ तो जला हुआ लगेगा. इसका कलर प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. The roasted color of the flour is the only important thing in this recipe. If it will be less roasted, it will look raw, and if it will be more roasted, it will look burnt. So make sure you roast it very well and roast it properly. Don't over roast it or don't less roast it. Let it cool for some time, and once it is cooled, we will add some dry fruits and sugar. If you want, you can skip the dry fruits, but I have shallow fried some almonds and cashew nuts in desi ghee. You can also dry roast them if you want to, and then we will add it in this. मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम को छोटे छोटे क्रश करके उसे थोड़ा सा देसी घी में रोस्ट कर लिया है, जिन्हें मैं अभी इसके ऊपर डाल रही हूँ.
अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट स्किप कर सकते हैं, बट ड्राई फ्रूट्स के साथ ये ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये देखिए, अराउंड 7 to 8 कैशू नट्स एंड 7 to 8 आलमंड्स मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। I'm using around 50 grams of almonds and 50 grams of cashew nuts. I've crushed them, roasted them, and I'm putting this. Now I'm mixing it with the help of a spoon. This is how I will mix it. Once the dry fruit is mixed properly, I'm going to add sugar to it. हम पहले ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें शुगर मिलाएंगे इस तरह से। अगेन, शुगर की क्वांटिटी फ्लोर की आधी होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो इसे कम भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। एक बार लड्डू बनाने से पहले आप चेक कर लें कि मीठा सही है या नहीं। While adding sugar, make sure that it is half the quantity of the flour that we have used. If you want more sweet, you can add more sugar. If you want less sweet, you can add less sugar. Before making laddus, finally, you can please check if your sugar is according to your taste. Mix it like this. Let it cool down so that it's warm and you can hold it easily in your hands. I suggest make the laddus while it is warm. Don't make it too cold, otherwise it will become hard. So I've mixed it very well and I will cool it for 10 minutes. हमने शक्कर मिलाकर इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब हम इसे 10 मिनट तक ठंडा करेंगे। ये इतना वार्म हो ताकि आप हाथ में पकड़ सकें, इसे ज़्यादा ठंडा ना करें वरना ये ड्राई हो जाएगा। अब ये तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के बाद ठंडा करेंगे और इसके लड्डू बना लेंगे। इस तरह से देख लीजिए, आप शुगर चेक कर लें और शुगर चेक अगर सही है आपके हिसाब से तो लड्डू बनाना शुरू करें, वरना आप और शुगर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से एक पोर्शन हाथ में लीजिए, आपके ऊपर है आप कितने साइज़ का लड्डू बनाना चाहते हैं। इस तरह से इसे प्रेस करते करते राउंड रोल करना है और इस लड्डू को रेडी करके वहाँ रखना है। Take a portion of this batter in your hand. The size of the laddus depend on you, how big or how small you want them. Keep pressing it and rolling it in your hand like this, and this is how your laddu looks. It's ready. It's so round and nice. We will make more laddus from the remaining batter. बचे हुए बैटर में से हम और लड्डू बनाते जाएंगे और इन्हें प्लेट में रख दीजिए। आपके हेल्दी और डिलीशियस लड्डू बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और ये बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी। I hope you guys like this recipe and you will share it with your family and friends. Please try it this Diwali. This is really healthy. Let us know and share your comments. How do you like it? Till then, keep supporting the channel. Don't forget to click the bell icon to get the notifications of all new recipes. Don't forget to like, share and subscribe and keep supporting the channel. चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करें नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस के लिए। और स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। इस दिवाली घर पे बनाया हुआ खाएं, अपना ध्यान रखें। Guys, take care, eat healthy, stay healthy, and stay connected. Once again, wishing you and your family a very happy Diwali and a prosperous New Year. Goodbye.